Welcome back to Droanacharya IAS YouTube channel. I am Dr. Daman Benipal and I'll be presenting you today daily editorial analysis. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे जो कि हमारी UPSC प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं. सो लेट्स बिगिन विद टुडेज वीडियो. आज इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं विच इज़ फिनटेक रेगुलेशन इन इंडिया. फिनटेक जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है जीएस पेपर 3 पॉइंट ऑफ व्यू से. स्पेशली आप इसे इंडियन इकोनॉमी से रिलेट कर सकते हैं. एंड ऑल्सो व्हेन वी टॉक अबाउट फिनटेक रेगुलेशन इन इंडिया, तो जो रेगुलेशंस आएंगी दे आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम जीएस पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू, कीपिंग इन माइंड योर गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन. सो दिस आर्टिकल इज़ ऑल अबाउट फिनटेक एंड फिनटेक रेगुलेशन इन इंडिया. बट सबसे पहले शुरुआत करते हैं बेसिक क्वेश्चन से दैट व्हाट इज़ फिनटेक. फिनटेक बोलते ही हमारे मन में क्या आना चाहिए, व्हाट एग्जैक्टली इज़ फिनटेक. तो जो फिनटेक टर्म है दिस इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी. फाइनेंस और टेक्नोलॉजी को मिलाकर बनता है फिनटेक. फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी. सो बेसिकली it refers to the technology startups that are emerging. ऐसे टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स जो कि हमारी ट्रेडिशनल बैंकिंग को, फाइनेंशियल प्लेयर्स को चैलेंज कर रहे हैं. एंड नाउ दीज टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स दे आर ऑफरिंग अस एरे ऑफ सर्विसेज, बी इट क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म, मोबाइल पेमेंट सोल्यूशन, ऑनलाइन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, मनी ट्रांसफ़र. तो टेक्नोलॉजी की मदद से फाइनेंस और टेक्नोलॉजी को आपस में कनेक्ट कर देना और जो ट्रेडिशनल बैंकिंग और ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम था उसे चैलेंज करते हुए एक न्यू एरे ऑफ सर्विसेज जो ऑफर होती हैं दैट इज़ कॉल्ड एज फिनटेक. नाउ फिनटेक की जब हम बात करते हैं, ऑल्सो जब हम थोड़ा हमारी इंडियन इकोनॉमी की अगर पिक्चर देखें तो 2020 एंड 2021 दिस वाज द ईयर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड हमारी जो इंडियन इकोनॉमी ग्रोथ थी वो 6.6% पे रह गई थी. बट उसके बाद इन द ईयर 2021 एंड 2022 अगर हम प्रोविजनल एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंगली देखें तो हमारी जो ग्रोथ है उसमें एक रिबाउंड आया है एंड नाउ वी आर ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 8.7% अगर हम 2021 एंड 2022 की बात करें. नाउ व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट दिस. देखो यहाँ पे कुछ रेफरेंसेस लेते हैं, जैसे कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट आती है इसमें IMF ने ये सजेस्ट किया है दैट इंडिया शैल बिकम अ $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2026 एंड 2027. और ये जो हमारा गोल है, ये जो टारगेट है टू बिकम अ $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, this will be achieved, this growth is attributed because of the exponential growth in the digital infrastructure. जो सर्विसेज के लिए, स्पेशली फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में जो ग्रोथ हो रही है, जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ यहाँ पे हुई है, इसकी वजह से हम बाय द ईयर 2026 एंड 2027 वी शैल बिकम अ $5 ट्रिलियन इकोनॉमी. तो यहाँ से आप समझ सकते हैं द इम्पॉर्टेंस ऑफ द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर सर्विसेज, इन शॉर्ट फिनटेक. अब यहाँ पे पेंडेमिक का रोल भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पेंडेमिक की वजह से जो डिजिटल अडॉप्शन थी हमारे कंट्री में उसका एकदम से राइज होता है एंड इट काइंड ऑफ एक्ट एज अ फिनटेक रेवोल्यूशन for both, be it for developing countries as well as for the developed countries, and it has played really well for India. यहाँ पे नीति आयोग की भी रिपोर्ट आ जाती है. नीति आयोग की इंडियाज़ बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी के अंदर जो फिनटेक का जो रोल है और जो रेगुलेटरी सैंडबॉक्स रिजीम RBI की है उसके रोल को यहाँ पे एक्नॉलेज किया गया दैट दिस बोथ ऑफ दीज थिंग्स, बी इट फिनटेक, बी इट द रेगुलेटरी सैंडबॉक्स ऑफ the RBI, these are helping India to achieve the $5 trillion target. इससे पहले भी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT की भी रिपोर्ट आई थी, उसमें भी यही हाईलाइट किया गया था कि हमारे कंट्री में जो डिजिटल इकोनॉमी है, जो डिजिटल सर्विसेज हैं, इकोनॉमी, सर्विसेज, एवरीथिंग, दे हैव द पोटेंशियल टू क्रिएट over $1 trillion in economic value.
सो यहाँ से आप समझ सकते हैं व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ हाउ फिनटेक इज़ गोइंग टू कंट्रीब्यूट इन आवर इकोनॉमी. नाउ इसी के साथ साथ इफ़ वी डिस्कस द राइज ऑफ फिनटेक इन इंडिया, थोड़ा सा एवोल्यूशन देखते हैं फिनटेक फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी इंडिया में किस तरह राइज हुई है. स्पेशली अगर हम पिछले 2 साल देखें, ओवर द लास्ट 2 years there have been a massive adoption of digital payment system in India because ये बहुत convenient हो गया है. It is a lot more convenient to go about with the basic financial services. So over the last 2 period there is a massive adoption of digital payment system. और ये जो फिनटेक इकोसिस्टम की जो ग्रोथ और जो एक्सपेंशन हुई है, इसको समझने के लिए देयर आर सो मेनी नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट वी नीड टू सी. सबसे पहले तो इंडिया के अंदर जो अवेलेबिलिटी ऑफ स्मार्टफोन्स है वो लगातार बढ़ती जा रही है और पिछले 2 सालों में 3 सालों में तो बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ हुई है. ऑल्सो स्मार्टफोन के साथ साथ अब फाइनेंस टेक्नोलॉजी है तो आपको इंटरनेट एक्सेस भी चाहिए, तो इंटरनेट एक्सेस भी इंक्रीज़ हुआ है, प्लस हाई स्पीड कनेक्टिविटी भी इम्प्रूव हुई है. तो इन सभी फैक्टर्स की वजह से जो फिनटेक इकोसिस्टम है इंडिया के अंदर वो एक तरह से डेवलप हो पाया है. अब रिसेंट ईयर्स में अगर हम देखें तो हमारा जो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है इसमें काफ़ी सब्सटैंशियल इंप्रूवमेंट्स हुए हैं, स्पेशली विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू पेमेंट मैकेनिज्म एंड इंटरफेसेस, जैसे कि IMPS इमीडिएट पेमेंट सर्विस, UPI यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, भीम भारत इंटरफेस फॉर मनी एंड अदर्स एज वेल. तो हमारा जो पेमेंट मैकेनिज्म है, जो पेमेंट इंटरफेसेस हैं, उसमें तो सब्सटैंशियल इम्प्रूवमेंट हमें देखने के लिए मिला है. तो फिनटेक का जो एक पर्सपेक्टिव है, द पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट हैव सीन अ सब्सटैंशियल इम्प्रूवमेंट. एंड ऑल्सो हियर द गवर्नमेंट्स मेक इन इंडिया and Digital India project, they have played a significant role, basically to accelerate the adoption of fintech. And यहाँ पे RBI is also commendable, it have, because RBI also pushed the growing use of electronic payments. And ultimately if इसी तरह से चलता रहा, it's very true that we will achieve a cashless society in the recent years. अब क्योंकि इंडिया में जो फिनटेक इकोसिस्टम है वो इमर्ज हो चुका है एंड दिस हैज़ बीन स्पेक्टेकुलर, वेयर द फिनटेक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, रेगुलेटर्स, बी इट गवर्नमेंट, ऑल ऑफ दीज आर फॉलोइंग अ कोलैबोरेटिव अप्रोच. एंड इनके देखो बिना कोलैबोरेटिव अप्रोच के साथ ये इतना बड़ा इम्पेटस आपको इस सेक्टर में नहीं मिल सकता था. वो फिनटेक इकोसिस्टम हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो, रेगुलेटर्स हो, गवर्नमेंट्स हो, इन सब के कोलैबोरेटिव अप्रोच के साथ ही ये कॉम्प्रिहेंसिव और कंटिन्यूअस इम्पेटस हमारी इस सेक्टर को मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ द ग्रोथ ऑफ दिस सेक्टर. Also, while transformational digital initiatives we talk about, which are by the government, these have helped the fintechs to enhance the social and economic well-being of millions of people around the world. We can say that this is the next stage of digital revolution. The next stage of digital revolution lies, in moving beyond these fragmented digital solutions. We should develop a digital infrastructure that will spur up digitalization across economies and societies. तो ये जो ब्रेक थ्रू प्लेटफॉर्म्स हमारे पास आए, बीट पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे, मोबीक्विक, ये सभी ऐसी डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स ने अनडिनाइबली दीज आर द फ्लैग बेयरर्स ऑफ द इंडियाज़ फिनटेक मार्केट. सो यहाँ पे जो हमने कोलैबोरेशन की बात की, एक बार इसी एस्पेक्ट को और देखते हैं, दैट लेट्स टॉक अबाउट द एस्पेक्ट ऑफ फिनटेक्स एंड गवर्नमेंट. देखो, गवर्नमेंट हैज़ डेमोन्स्ट्रेटेड दिस टू द वर्ल्ड दैट वी आर फॉलोइंग अ यूनिक मॉडल ऑफ PPP, public private partnership, by building a strong public infrastructure in the India stack. And along with this, we are facilitating, we are enabling the public sector innovation also. So we are building a public infrastructure with public sector innovation, public private partnership. और ये जो स्टैक है हमारा, ये बेसिकली 4 अप्रोचेस के ऊपर बेस्ड है. नंबर 1, the biometric identity in the form of Aadhaar for identification.
ये आधार में गवर्नमेंट का रोल आ जाता है, जो बायोमेट्रिक आइडेंटिटी है वो आधार की फॉर्म में होती है. Then you need a bank account for fintech. So getting everyone a bank account, that is achieved even through Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana. And ultimately we are achieving financial inclusion because of this. The role of government, public, Aadhaar for identification and bank accounts, financial inclusion, Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana. And then what about the private innovation? Private innovation is building up some scalable platforms where we can transfer money, be it IMPS, Immediate Payment System, Unified Payment Interface, BHIM, BBPS, Bharat Bill Payment System. Also, we are allowing banks and fintechs to access platforms like UPI, GSTIN, DigiLocker to innovate even further, right? So this open API infrastructure, this has leveraged heavily by fintech to address this diverse use cases, and this will continue to act as the core pillar for powering the next wave of growth. So this is a very important model that India has followed in terms of the fintech. Moving ahead, let's understand the significance of fintech. देखो, फिनटेक्स की वजह से जो पेनिट्रेशन है आपकी सर्विसेज की वो इंक्रीज़ हुई है, स्पेशली ऑफ द अंडर बैंक्ड अनसर्व्ड सेगमेंट ऑफ आवर वास्ट मार्केट. जो हमारे बैंक्स थे, ट्रेडिशनल बैंक्स थे, जो वहाँ पे जो वो लूप होल्स थे, जो उन बैंक्स की वजह से जो अंडर सर्व्ड या अनसर्व्ड लोग थे, दे वर फेल टू रीच दो सेगमेंट्स. द फिनटेक इज एनेबलिंग पेनिट्रेशन टूवर्ड्स देम. Also, fintech provides transparency, and thanks to its adaptability, multilingual option, access, robust interface, because of all these things, it has led to an expansion of the India's consumer base. Also, fintechs has kind of eased out the friction between the financial institutions and retail customers, and now fintechs are drawing capital flow into the Indian economy easily. One of the most important perspective is that by using fintech, by the emergence of fintech, we have bridged the gender and the accessibility gap in the financial services. Yes, when you talk about financial services, we had gender gap here as well, accessibility gap here as well. It helped to meet the challenges arising from restriction on the in-person mobility, let's say of women. उनको allowed नहीं है जाना बैंक तक, loss of employment at the time of financial distress. So उन तक भी ये services पहुँची. And especially the ease of signing up, making transactions and obtaining credit, so easily. जो cash free model आया है, this has resonated with the consumer base of women. India's market has witnessed an upward trend in fintech unicorn and soonicorn valuations. This is an outcome of even the regulatory sandbox regime introduced by RBI in 2019, because this has also helped us, to pave our way towards becoming a $5 trillion economy. That is the significance here as well. Also, I would like to mention the Finclovation. Finclovation, ये क्या है? So this is basically India Post Payments Bank. Finclovation. It has been launched by India Post Payments Bank. It is a 100% government owned entity under Department of Post. They announced this. What is Finclovation? It is a joint initiative to collaborate with fintech startup community to co-create and innovate solutions for financial inclusion. So now Department of Post, the Indian Post Payment Bank is going to have a joint initiative. They're going to collaborate with the fintech startups so that we can derive that innovative solutions to achieve financial inclusion. The startups, they are encouraged to develop solutions like about creditization, to develop innovative and inclusive credit products जो कि टारगेट कस्टमर्स तक पहुँचे, डोर स्टेप
तक पहुँचें थ्रू द पोस्टल नेटवर्क, डिजिटाइजेशन, ट्रेडिशनल सर्विसेज एंड डिजिटल पेमेंट टेक्नोलॉजीज़, ट्रेडिशनल मनी ऑर्डर, इनको किस तरीके से डिजिटलाइज किया जाए, any market-led solution that can help to solve any other problem related to the Indian Post, payment bank or Department of Post. तो ये जो intersection होगा, the intersection of this technology with the financial services coupled with the traditional distribution network, this is going to open up a new set of business opportunities. तो इस चीज़ को भी याद रखेंगे. Then what are some of the emerging trends in fintech industry? देखो emerging trends की बात करें तो blockchain technology आ जाती है, that maintain records on a network of computer but it has no central ledger. हम पढ़ते हैं इसके बारे में डिटेल में. Then we have smart contracts जिसमें computer programs को utilize किया जाता है. It can even utilize blockchain and it automatically execute contracts between buyer and the seller. इसीलिए इसको smart contracts कहते हैं. Open banking, this is the concept of liens on blockchain, and the post-its, and that third party should have the access to the bank data and to build the applications and create a connected network of digital financial institutions. That is open banking. Then there is InsurTech, जिसमें टेक्नोलॉजी को यूज़ करके जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री है उससे और सिंप्लीफाई और स्ट्रीमलाइन किया जा रहा है. Then there is RegTech for financial firms, to meet the industry compliances, the regulations, especially the anti-money laundering, KYC protocols to fight with the fraud. So there is RegTech as well. Cyber security, especially by seeing that the cyber crime is proliferating. We need to decentralize the storage of the data, cyber security, all of these things are intertwined. So these are some of the emerging trends. However, there are some issues with fintech. देखो फ्यूचर जो है फिनटेक का, इट लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग. हाउएवर इट ऑल्सो ब्रिंग्स ग्रेटर एक्सपोजर टू द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, सैंक्शंस, लीगल एक्शन. बिकॉज फॉर एग्जाम्पल जो फिनटेक कंपनी है, इट टेंड टू बी लेस रेगुलेटेड देन द ट्रेडिशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. इन एडिशन जो फिनटेक फर्म्स हैं, दे आर मोर वल्नरेबल टू साइबर अटैक सिंस दे ऑफन होल्ड कंज्यूमर सेंसिटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. So therefore data privacy is one of the important and most legal issue over here to deal with the fintech industry, because fintech companies जो हैं by default they will collect and they will use large amount of customer data. So it raises the concern कि वो जो data है वो किस तरह use किया जाएगा, किस तरह protect किया जाएगा. One of the most critical issue in developing the financial technology is the risk assessment and the data breach prevention. अब क्योंकि जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, दे अनकवर अ डाटा लीक, दे मे बी एबल टू आइडेंटिफाई द परपेट्रेटर ड्यू टू नॉन कंप्लायंस विद द एंटी डाटा लीक regulations. Like for example, in countries like European Union, the non-compliance with anti-data leak financial technology regulations can lead to heavy fines. So we need to work more towards data privacy. Then money laundering, of course. We have talked about money laundering a lot. It is the process where the proceeds of criminal activity are transformed into a legitimate fund. And unusual money laundering, it costs a firm and the government more than $2 trillion every year. So the legal issue here is in terms of the regulation of the fintech industry, because the way fintech companies, they facilitate payment and transfer. So fintech companies are allowed to comply with the anti-money laundering regulations as well. So they need to take some measures to prevent and detect the money laundering. The anti-money laundering regulations, laws, programs for fintech regulation should include like customer identification, their screening, transaction monitoring, reporting of any suspicious activity. And then cyber attacks are a big issue. Financial institutions are the most common target for the cyber attacks. As we just said, because these companies hold large amount of data, it makes them a lot attractive target for the cyber criminals. Also, the fintech firms may be less prepared to defend against the cyber attack than the traditional financial firms are. So all the financial firms, they need to have a robust cyber security program in place to ensure that there is proper protection.
These programs should include data encryption, firewalls, intrusion detection systems as well. So of course there is a challenge to the fintech, coming from big techs, because they have enormous customer network and their primary business in the social media, telecommunication, internet research, e-commerce, and they have their global presence as well. तो जो big techs होती हैं, they use new technology and that enabled fintech startups to unbundle their financial services and to reverse the unbundling. So the challenge is from the big techs as well. Lastly, what are the regulations on the fintechs? देखो बहुत सारे loopholes हैं when it comes to regulating the fintech, and there are multifold disruption of technology. तो policy makers के लिए भी बहुत मुश्किल है कि किस तरह से इसको लेकर laws बनाए जाएं. तो ऐसे केस में रेगुलेटर्स के ऊपर इम्पेरेटिव रखा हुआ है टू प्लेस सम रिस्ट्रिक्शंस इन टर्म्स ऑफ डाटा प्रोटेक्शन, प्राइवेसी, सिक्योरिटी. सो द regulations have very light touch. They are aimed at reducing the risk arising from fintech industry. Broadly 5 regulations हैं जिनके थ्रू आप fintech sector को regulate कर सकते हैं. There is Payment and Settlement System Act of 2007, Peer-to-Peer Lending Guideline of 2017, National Payment Corporation of India regulations for payment via UPI, regulatory governing NBFCs under RBI Act, and then the regulation governing the payment banks under the Banking Regulation Act. Also, the RBI has also set up their own fintech department in the January 2022. तो इनके थ्रू यहाँ पे सेटअप किया जाता है. अब राइट अप्रोच क्या रखनी चाहिए व्हेन इट कम्स टू डीलिंग विद दी फिनटेक्स? देखो वर्ल्ड वाइड 3 तरह की रेगुलेशन है. वन इज एक्टिविटी बेस्ड रेगुलेशन. इसमें क्या है कि जो आइडेंटिकल एक्शंस हैं दे आर रेगुलेटेड इक्वली रिगार्डलेस किस तरह का लीगल स्टेटस है, किस तरह की एंटिटी है. एक्शन बेस्ड रेगुलेशन. सेकेंड इज एंटिटी बेस्ड रेगुलेशन, जिसमें एक पर्टिकुलर लाइसेंस्ड फर्म के ऊपर वो किस तरह की एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व है, डिपॉजिट टेकिंग हो रही है, पेमेंट फैसिलिटेशन है, लेंडिंग है, उसके बेसिस पे रेगुलेशन लगेगा. या फिर आउटकम बेस्ड, जहाँ पे जो फर्म्स हैं दे आर रिक्वायर्ड टू इंश्योर दैट देयर आर सर्टेन फंडामेंटल एंड कॉमन टेक्नोलॉजी रिलेटेड एस्पेक्ट्स. तो आउटकम बेस्ड भी हो सकता है. तो वर्ल्ड वाइड ये जो अप्रोचेस हैं ये फॉलो की जाती हैं इन टर्म्स ऑफ रेगुलेटिंग दी फिनटेक. देन अगर हम इंडिया देखें कि इंडिया ने कौन कौन से स्टेप्स यहाँ पे उठाए हैं, तो हमारे 0 MDR गाइडलाइंस आए थे जिसमें मर्चेंट ट्रांजैक्शंस के लिए स्मॉल टिकट डेबिट कार्ड जो हैं वो आते हैं. सो जो फिनटेक फर्म्स हैं दे आर ग्रोइंग इन साइज एंड दे मे एनकाउंटर इंक्रीज रेगुलेटरी स्क्रूटनी. तो sensible regulation with transparency, it will only strengthen this sector in long run. It will facilitate the Indian economy in growing at its potential rate by allowing its growth drivers to fuel up the engine of economic advancement. So this topic of fintech is very, very, very important. Do practice a mains question, write about what are fintechs, the significance of fintechs, and what are the challenges in terms of the India's financial ecosystem, and how the absence of regulatory framework is a big challenge for that. तो इस तरह से आप इस आंसर को प्रैक्टिस कर सकते हैं. So that is all for this video. आज की इस वीडियो के लिए इतना ही. Thank you so much for watching. I will see you all in my next one. Thank you so much.